सो लास्ट दिन हम लोग सी प्लस प्लस का इंट्रोडक्शन पढ़े थे। तो आज पढ़ते हैं बाकी चीज। एक काम करते हैं, हम लोग को पढ़ना और आसान करने के लिए लेट्स राइट दिस प्रॉम्प्ट। So I just did that. Okay. So what to do? Let's just copy it. Okay. Let's create an word file. Oh, just copy paste it. Okay. So हम लोग ऑलरेडी व्हाट इज प्रोग्रामिंग तो पढ़ लिया था, राइट? पढ़ लिया था। इंस्टॉल इन आईडी भी हो गया था, हेलो वर्ल्ड हो गया था। इनपुट आउटपुट सीन एंड आउट पढ़ेंगे। कमेंट्स एंड कोड डेरिवेटिव। प्रोग्रामिंग क्या होता है? आई थिंक ये तो बेसिक्स है, सबको ही आता है। कंपाइलर क्या होता है, तो बेसिक्स है, सबको ही आता है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। तो कमेंट्स एंड कोड डेरिवेटिव। सो कमेंट्स क्या होता है? Let's just open the code, VS Code. This was the project, right? Project folder, which was working, right? Let's just rewrite the code. तो अभी के लिए सिर्फ देख लो CIN क्या होता है। This just declare array, okay? Not array, variable. In variable, if we want to take input from user, then we use CIN, okay? And cout means when we want to show output to the user, then it is CIN. Hello, your roll number is, okay. Okay. क्लास करते हैं ना, नहीं करते।
I don't think so it will work. Let's just check it, okay? It should come up. Yeah, I have done it. So that's how the CIN work. CIN basically takes, yeah, the input from user. So अच्छा ओके, व्हाट इज कमेंट्स? कमेंट्स क्या होता है? कमेंट्स हम लोग डबल स्लैश से यूज करते हैं फॉर रीडेबिलिटी यूज। ये कोड को आसान कर देते हैं पढ़ने में। जैसे ये दिस इज एन इनपुट, दिस इज एन इंटीजर वेरिएबल, इसके लिए कमेंट यूज होता है। कमेंट जब हम लोग कंपाइल करते हैं तब कमेंट्स यूज नहीं होता है। कमेंट्स मेनली यूज फॉर रीडेबिलिटी। ओके, so let's just see. It's done. It's done. Variables and data types, right? So let's just work on the variable and data types. Okay. Tell me about variables. Types and constants. So see, there is everything. Variable is like a container, a named storage location that holds a value in your computer's memory. Data type देना होता है, variable name देता होता है, and value. This is the syntax. सो क्या क्या कौन सा टाइप होता है? इंट होता है, इंटीजर नंबर्स को होल्ड करता है, कोई डेसिमल अलाउ नहीं होता। फ्लोट होता है, डेसिमल नंबर्स अलाउ होता है, सिंगल प्रिसिशन। डबल मीन्स डबल, डबल प्रिसिशन। ओके, क्या मीन्स होता है सिंगल सिंगल कैरेक्टर के लिए। स्ट्रिंग होता है टेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। बूल होता है ट्रू और फॉल्स को करने के लिए। देयर आर सम नेमिंग रूल्स आल्सो, लाइक हमेशा वेरिएबल का नेम लेटर से स्टार्ट होना चाहिए और अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, कभी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। कोई स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होता है। ये केस सेंसिटिव होता है। ओके, दिस इज द डेटा टाइप्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। ओके, लेट्स जस्ट copy the code and see. Let's just create a random file, folder, data types, and data types and operators. So as you see, this is int, right?
So that's how it should work. Okay, let's just see whether it is correct or not. 20 point. Sorry. Let's just see whether this works or not. See, अगर हम लोग 20 पॉइंट अगर हम लोग फ्लोट वैल्यू इंटीजर को देते हैं, अगर हम लोग डेसिमल वैल्यू को इंटीजर में देते हैं तो क्या होता है? डेसिमल वैल्यू इज नॉट गोइंग टू प्रिंट, इट्स गोइंग टू प्रिंट एज अ इंटीजर वैल्यू. Like this is double precision, right? Let's just wait. If we just write like this, what should happen? Let's see. Same. See, if you see, it will just print the only first precision, only 5. You can't print anything else. Like you see, it will also just print till 9246. If you see, float height. Can you see that? Float height, height, right? Salary, just right. Because if you see what is data type, it just printed that now. And if you see that this is the main, okay, double precision, right? And constant is like you can't change the value. You cannot change the value in constant. And define means when we define any value at the top of a code after the using namespace. Like the const change, we can change this value, right? Pi, it's actually very useful in some cases where we want to use this variable in whole code. Define कम होता है. Defines the scope of the define is global, entire file, and constraints block of file just text replacement. It has no memory allocation. टाइप मॉडिफायर शॉर्ट होता है, यूज होता है, जैसे अनसाइंड इंटेज हो गया, सिमिलर इंटीजर 2. लॉन्ग होता है, लार्जर इंटीजर डबल और ज़्यादा बड़ा वैल्यू होल्ड कर सकता है. अनसाइंड हो गया, ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यू से होल्ड करता है. साइंड हो गया, साइंड का होता है साइंड कैंस तो नेगेटिव वैल्यू. टाइप टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली हो सकता है. एक्सप्लिसिटली अगर करना है तो हम लोग ब्रैकेट के अंदर डेटा टाइप का नाम लिखना पड़ेगा. सो ऐसे होता है. Let's just see the example now. Let's just copy this.
You see, right, it's automatically converts. Sorry, you have to print y. See, automatically converts. So that's all.